हम देखिए व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द लेफ्ट एज ऑफ द विंडो एंड द लेफ्ट एज ऑन द एनवलप लेफ्ट एज ऑफ द विंडो है विंडोर लेफ्ट एज और लेफ्ट एज ऑफ द एनवलप भितर केते डिस्टेंस रहबो मिनिमम डिस्टेंस केते रहबो आंसर हबो केते 15 mm है देखंतु लेफ्ट एज ऑफ द विंडो है विंडोर लेफ्ट एज और लेफ्ट एज यार भितर लेफ्ट एज ऑफ द एड्रेस ब्लॉक स्टैंडर्ड्स फॉर सेल्फ एड्रेसिंग देखो आमर एड्रेसिंग आमर ये लोगो रहीच mm टू 50 mm है लोगोटा आउ जो क्यारेक्टर आम टूर लिखा एड्रेस ब्लॉक रे 40 क्यारेक्टर प्रति क्यारेक्टर प्रति लाइन रे 40 क्यारेक्टर्स ताठू अधिक रही एक्सक्लूडिंग स्पेस छाड़ला 40 क्यारेक्टर्स है एमती जितटा धाड़ी आ जो लिखे धाड़ी जाक धाड़ी भितर 1 ରୁ 5 mm भितर गैप रहा आउ एड्रेस ब्लॉक रू आमर लेफ्ट साइड बॉटम साइड राइट साइड तीन जाक पटरू आम देखिए 15 mm गैप रहा आउ एड्रेस ब्लॉक चारिपटे 10 mm लाखे स्पेस ब्लैंक रही लिखा ना जना पड़े एड्रेस लिखाई बोली 10 mm चारिपटे एड्रेस ब्लॉक 10 mm लेफ्ट राइट टॉप बॉटम चारिपटे 10 mm गैप रहा फ्रैंकिंग मशीन स्टैम्प लगाई आमर 74 mm एरिया रहिबो फ्रैंकिंग मशीन आप स्टैम्प लगे पारे एड्रेस ब्लॉक रो टॉप साइड को 40 mm गैप रहा दरकार टॉप एज ऑफ द एनवलप को एड्रेस ब्लॉक रो टॉप एज एड्रेस ब्लॉक देखुछंदी जो 40 कैरेक्टर लिखाई था चारिपटे ब्लॉकटा है आ जो रहा आमर चारिपटे 15 mm 15 mm 15 mm रहिबो तीन पटे ऊपर पटे 40 mm मन रहा ये मन रखिए लेफ्ट बॉटम राइट एज ऑफ द एनवलप रू एड्रेस ब्लॉक रू मिनिमम 15 mm डिस्टेंस रहा दरकार स्पेस रहा दरकार टूटा लेफ्ट साइड रो माने बॉटम ऑफ द लेफ्ट साइड ऑफ द एनवलप रे हमें 2 एड्रेसटा लिखि परिबा तापरे बारकोडटा जो हमर रहइबो सभा तळे 60 ରୁ 60 mm into 10 mm बारकोड रहि परिबो तापरे हमर जो फ्रैंकिंग मशीन बा एरियाटा होची 74 mm मनला तापर आमर जो क्यूआर कोड रहिबो क्यूआर कोड होची केते साइज तार रहिबो 18 mm into 80 mm रो क्यूआर कोड आमे रखिबा 18 mm रू 80 mm ताडू बड़ साइज होबनी आ चारिपटे तार केते गैप रहिबो 5 mm लाखे गैप तार चारिपटे रहिबा दरकार हला चारिपटे 5 mm गैप रहिबो एटा होची देखंतु क्यूआर कोड रहिबो कोथरे एड्रेस रे जदी रखिबे एड्रेसिंग एनवलप फॉर डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल पे डोमेस्टिक पे सेम तांगर फॉर्मेटा सेम यही स्टैंडर्ड हिसाब से एड्रेसटा लिखा जाए एड्रेस ब्लॉकटा सब सेंटर ऑफ फ्रंट साइड सेंटर रहिबो आ जो फ्रॉम एड्रेसटा हमरो लेफ्ट साइड बॉटम ऑफ द कॉर्नर रही परिबो नहले हमरो बैक साइड ऑफ द एनवलप रे रखि परिबा लोगो लिखिया पे 25 into 50 mm हमरो सभा तळे जो बारकोड रहबो 60 into 10 mm हैला व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द टॉप एज ऑफ द विंडो एंड टॉप एज ऑफ द एनवलप 40 mm देखिले ना एनवलप रो विंडो होची कोडा माने विंडोटा होची कोडा एड्रेस ब्लॉकटा व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द बॉटम एज ऑफ द विंडो व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस इन द बॉटम ऑफ द विंडो एंड बॉटम एज ऑफ द विंडो 15 mm हैला बॉटम 15 स्टैम्प्स एंड फ्रैंक इंप्रेशन मे बी टॉप कॉर्नर ऑफ द एनवलप विथ हाउ मच मिनिमम गैप ऑफ द एड्रेस ब्लॉक ऑफ द रेसिप्टेंट हैला केते मिनिमम गैप रहइबो एड्रेस ब्लॉक टू टॉप कॉर्नर रू 10 mm गैप रहइबो ना एड्रेस जो हमर फ्रैंकिंग इंप्रेशन लागिवो एड्रेस ब्लॉक टा रू केते गैप रहउची फ्रैंकिंग इंप्रेशन टा 10 mm गैप हैला मन रहला according to the regulation 88 of post office regulation 2024 which of the following condition apply to the placement and size of the 2D barcode or QR response code of the envelope QR response code size केते रहइबो 2D barcode should have a minimum of 28 भूल अछि एटा हबनी a 15 mm space shall be left from the bottom of the envelope of the barcode with 5 mm gap ना 2D barcode रो आंसर होबो कोन a minimum of 10 mm gap should be around the 2D barcode and the barcode should be 25 into 25 mm size ना the sender's logo side should not exceed एटा ठीक the 50 mm space shall be left at the bottom of the envelope with the barcode printing with 5 mm quiet space around the 2D barcode ठीक अछि 15 mm रो गैप रहइबो से तळ पटु किंतु चारि पटे 5 mm रो स्पेस रहइबो गैप रहइबो अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन 18 into 18 साइज हम मन रखले ना 18 into 18 mm
According to regulation 88 of the post office regulation, what is the maximum size allowed for sender's logo to be placed on the envelope? Sender's logo होची sender's logo टा जो रहबो 25 into 50 mm जो logo टा देखिला हम इंडियन ऑयल लोगो लागिथिला हला. What is the minimum size of the printed barcode with quiet zone in the window of the envelope? Printed barcode रो केते रहबो 60 mm length 10 mm breadth 60 mm length breadth barcode टा जोटा हमर गारा गारा ही पडुची 60 into 10 ना मन रखियो. What is the penalty for a letter that infringes the condition mentioned in the regulation 87 and sub regulation 1 to 13 of regulation 88 like dimension and color etc. letter जदी हला letter कोन हबो double the charge of the postage that letter will be double the charge हला. यदि letter जदी infringement करूची condition को letter obey करूनी तले कोन लागियो double the postage. What is the maximum weight allowed for a letter card? letter card ର maximum weight केते 5 ग्राम रहइबो जान 5 ग्राम. Which of the following statement with respect to letter card is correct? Statement 1, anything that can be attached to the and enclosed in a letter card, anything जहाँ भी attach कर पारिबे कि letter card should be made up of a paper of a minimum 70 grams per square meter. Anything can be attached. नाइ भूल. Only statement 2 is correct हबो answer हला. then letter card ର minimum paper ର minimum 70 grams per square meter हबो. letter card रे आपण जहाँ चाहिले ताहा रखि पारिबे नाही. ओनली स्टेटमेंट 2 होची करेक्ट हबो. लेटर कार्ड रो कोडा करेक्ट हबो हला. ओनली स्टेटमेंट 2. लेटर कार्ड रे एनीथिंग नाय कोडा भी अटैच करी की रखि परिबे नाय. लेटर कार्ड रे से कोन से भीतर ही जोडा आपण प्रिंट करे सेटा ही फोल्डेड हबो. अकॉर्डिंग टू द रेगुलेशन हाउ मेनी साइड्स ऑफ ए प्राइवेटली मैन्युफैक्चर्ड लेटर कार्ड मस्ट बी फुल्ली क्लोज्ड विथ कंटीन्यूअस गमिंग ग्लू एंड एडसिव. तीनटा पट क्लोज हेई थिबो एनवेलप से प्रकार रो. लेटर कार्ड कोन तीन जगह प्लस क्लोज हेई थिबो आ गोटे पट खुला थिबो. व्हाट हैपेंस इफ प्राइवेटली मैन्युफैक्चर्ड लेटर कार्ड इन्फ्रिंजेस द कंडीशन treated as कोन हबो treated as letter and single deficiency will be corrected ना कोन treated as letter double the deficiency of the postage charge on delivery. यदि प्राइवेटली मैन्युफैक्चर्ड लेटर कार्ड कंडीशन रेगुलेशन 89 अनुसार डायमेंशन अदर रिक्वायरमेंट होउनी ताले कोन हबो लेटर चार्ज लेटर कार्ड लेटर भले ट्रीट करा जिवो आ डबल द डेफिशिएंसी हबो हैला पर मते जति बांधी थिबे ताकू देखि की करा जिवो माने मनर ऑलरेडी पैसा दिछन ताकू माइनस करी करा जिवो. व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल वेट ऑफ ए पोस्ट कार्ड? मैक्सिमम वेट कार्ड रो पोस्ट कार्ड रो परमिशन केते 5 ग्राम हैला. व्हाट इज द स्पेसिफाइड डायमेंशन ऑफ ए पोस्ट कार्ड? व्हाट मस्ट बी रिटन ऑन इट्स एड्रेस साइड हैला. स्पेसिफाइड डायमेंशन केते रहइबो 140 into 90 mm लीजेंड पोस्ट कार्ड इन हिंदी और इंग्लिश लिखि परिबे हैला. पोस्ट कार्ड इन हिंदी इंग्लिश 140 into 9 mm रहइबो. लीजेंड पोस्ट कार्ड इन हिंदी इंग्लिश लिखि परिबो. आ अलग अलग लिखा हिंदी इंग्लिश. व्हाट कैन द सेंडर्स एड्रेस कैन बी रिटन ऑन ए पोस्ट कार्ड अकॉर्डिंग टू द पोस्ट ऑफिस रेगुलेशन? On the top right corner of the front side or the bottom on the center of the top left hand corner of the back side हैला. बैक साइड रो टॉप लेफ्ट हैंड कॉर्नर रे आपनो एड्रेस सेंडर रा एड्रेस लिखा जीवा कथा हैला. According to the post office regulation, nothing shall be attached to the postcard except stamps in payment of postage or other fees which shall be affixed only to the address side of the postcard. ठीक अछि. A gum label completely adherent to the card bearing the name and address. गोटे लेबल लिखि परिवे नेम एंड एड्रेस जागु पठाउछंदी. A similar label not of 50 mm bearing the name and the address of the card. Engravings, illustration, photographs, very thin paper completely adherent to the card. A similar label not exceeding it habo आकोडा हबो गम लेवल adherent to the card लखि परिवे all of the above. सबतिक अटैच हेई परिवो ताले हला. A similar level not exceeding 50 mm into length and 20 mm into width 50 into 20 रो लगे परिवे. According to the post office regulation 2024, what happens if a postcard infringes in special condition? postcard टा जदी infringe होला special condition कोन हबो treated हबो letter भलिया कोन हबो treated हबो letter भलिया and charge on delivery the double the deficiency between the postage already paid for the postcard by जदी पैसा देथिबे and the deficiency जदी रहला postage payable for letter पई केते लेटर होइतले केते देइथांदे postcard पई केते देइछन माइनस करी की ता डबल दिया हबो subject to minimum 1 rupee if the amount include पैसा it should be rounded to मनकर 8 टका 20 पैसा हला सेटा 9 टका हिसाब रे राउंडेड करा हिजो नेक्स्ट नियरेस्ट रुपीस को हला जतेटा आपण देबे जो कैलकुलेशन कला बेलगु आपण 50 पैसा रे पोस्ट काटा होजी ना सेठी माइनस कला बेलगु 50 पैसा समथिंग पैसा रे आसीबो आसीले नेक्स्ट पैसा रुपीसटा दिया जीवो. According to post office regulation 2024, which of the following is true regarding book post? Book post रे कोन आइटम रहइबो provided it does not exceed 10 kg of weight. नाइ book post केते maximum weight 5 kg एटा कोन हबो
A book post contain only books and magazines but not exceed 2 kg weight ନାହିଁ. A book post containing books, magazine, invoices and reports must not exceed 5 kg weight. 5 kg maximum ରହିବ. According to post office regulation 2024 which of the following cannot be sent under book post. Items containing paper money, stamps, checks, items containing publication of all kind ତ ପଠେଇ ପାରିବେ. Item containing any document of commercial, legal and personal nature. Book post containing one stamped and addressed envelope, postcard, wrapper being the name and address of the envelope ହେଲା. आइटम कंटेनिंग मनी चेक स्टाम्प्स एरा सब पठे पारिबेनी आ सब पठे पारिबे. कमर्शियल लीगल पर्सनल नेचर बुक पेस्ट गोटे वन स्टाम्प्ड एनवेलप गोटे एड्रेस एनवेलप लगेगी पोस्ट कार्ड रखी पारिबे. रैपर बिंग द नेम एंड एड्रेस ऑफ द पैकेट गोटे पोस्ट कार्ड रखिकी नेम एंड एड्रेस रखिकी एरा सब पठे पारिबे बुक पोस्ट रे. बट अकॉर्डिंग टू पोस्ट ऑफिस रेगुलेशन 2024 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी सेंड अंडर बुक पोस्ट. Posted with a cover with an unfastened envelope in a cover. Examination under book post can be easily removed for the purpose of examination without breaking and seal. गोटे कभर विदाउट कभर आप पोस्ट कले मनर जदि पोस्ट कले कभर रे बुक पोस्ट ताले जिन सीना इजिली रिमूव कराइबो. आइटम कंटेनिंग पब्लिकेशन ऑफ ऑल काइंड ठीक पठे पारिबे. आइटम कंटेनिंग बुक पोस्ट आइटम एड्रेस टू एड्रेस और स्टेम अदर देन डोर ऑफ आइटम. बुक पोस्ट आइटम रे डॉक्यूमेंट पठेले किंतु जोटा एड्रेस रे ना लिखाई सेठी न जाई कि आ गोटे जगह को लिखाई दिबो ताले सेटा हबोनी हला. सेंडर छाड़ी की एड्रेस फ्रॉम सेंडर अदर देन दोज ऑफ द आइटम. दोज आइटम छाड़ी की आउ बुक पोस्ट छाड़ी की आउ कौन आइटम आप पठेबे डॉक्यूमेंट छाड़ी ताले हबोनी. As per the post office regulation 2024 what happens if book post item contain document address to the address is stemming from a sender other than those of the item. The item will be treated as letter post. The item will be rejected and returned to the sender regardless of the weight. The item will be treated as letter post. कौन हम द आइटम will be treated as letter post भाया जदि 500 ग्राम है तेल पार्सल पोस्ट लेटर पोस्ट 500 ग्राम भितर हेले 500 ग्राम जब अधिक है पार्सल भाया ग्रहण करा कौटा बुक पोस्ट है. बुक पोस्ट को आइटम को जब 500 ग्राम कम अच्छी लेटर भाया ग्रहण करा 500 ग्राम अधिक हेल्ले बुक पोस्ट. जब इनफ्रिंजेशन कंडीशन है treated as letter or India Post parcel on charge double the charge of the postable page or rather whichever results in lower charge taken into account to any postage paid है. ती postage paid करथिबे देखा हबो लेटर और पार्सल कोडा भितर कोडा कम पड़ुछ है. whichever results in lower charge taking account है. लेटर और पार्सल भितर जोटा कम पड़ुछ 500 ग्राम रु कम अछि त लेटर हिसाब रे ग्रहण करा हबो. 5 ग्राम अधिक होले पार्सल हिसाब रे नियाबो. According to the post office regulation 2024 items transmitted as literature file brand shall not contain any type of communication writing printed in ordinary type except the. According to the post office regulation 2024 literature file brand shall not contain any communication writing. Table of contents रही पारिबो. Title of the book any key to instruction all of the above होला. ए सब दियो रही पारिबो. आ छोड़ा से लिखिबे एक्सेप्ट एतिकी आ कोडा रही पारिबोनी. any key instruction for the use of special type रही पारिबो. table of contents रही पारिबो. what is the maximum allowable weight for literature of the bind item. what is the maximum allowable weight for literature of the blind 7 kg. मनोकंदु what happens if any of condition of the literature blind are infringed upon according to the clause the item will be seized by postal authorities. No penalty is imposed. The item is charged double the postage of the relevant item. The item is seized by the postal authority. Item is charged double the postage of the relevant postal. If the blind of literature for blind condition satisfy करनी according to the post office regulation which of the following is chargeable for the letter air mail fee for air transmission का chargeable. आप सब की chargeable नहीं. postage तो free. registration fee free. acknowledgement fee free. air mail fee टा खाली देबे. लिटरेचर फॉर द ब्लाइंड पठेले जोटा ब्रेली लेटर रे जो अंध मानक पई पठा होची मटेरियल जाको हला. व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर प्लेट्स डिस्क फिल्म स्टेप्स वायर्स with recorded spoken message for the blind to be treated as literature for the blind under postal regulation. What is required for plates? The item must be addressed to a private institution for the blind. The item must be sent by address to an officially recognized institution for the blind. The item must be accompanied by certificate of authenticity. The item must be accompanied by letter of recommendation from a healthy professional. Literature of blind को क्षेत्र में ट्रीट करा जिवो जदी ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन टेप्स पठाउछंदी अधिक अलग जिन पठाउछंदी ताले रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन पठेले सेटा को लिटरेचर फॉर द ब्लाइंड ग्रहण करा जिवो. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शैल नॉट बी ट्रांसमिटेड बाय पोस्ट एज पीरियडिकल्स अकॉर्डिंग टू द क्लॉज 94.
book of journal of scientific and academic nature, a publication printed in published in India, hela, that comply the provision of act, hela, a book of journal scientific technical academic hobo nahi कोन हला scientific academic सेटा को periodical post ग्रहण करा जीवो नाइ ना which of the following statement with respect to periodic no separate postal registration shall be required for transmission of periodical registration दरकार ना periodicals which are covered under the definition of newspaper which are available to constitution separate postal registration light ticket the publisher कौन होगा आंसर दीजिए जाएगा correct no separate postal registration shall be required for transmission periodical by post periodical which are contained under the definition of newspaper and wish to avail the concession rate where must be the subscription press and register journal of India under number dash to be printed on the periodical only on the first page of the periodical first page or last page जोड़ी भी लगे पारे subscription press register of India press register journal of India अपन registration number टा first page last page लगे पारे in case of the infringement of the condition of the specified in the sub regulation account 3 of post office regulation there 24 and periodical post the item shall be treated as and charged as infringement condition है periodical post रे the item is charged as book post and any postage paid shall not be taken into account of adjusting charges postage paid book postage credit करा हबो हला any postage paid on it shall be taken into account while addressing the charges book post वाले ग्रहण करा जो book post rate टा लागिवो periodical post ले what is the minimum weight required for an item treated as India Post parcel minimum होची 500 ग्राम under standards for addressing the international item address of the sender the address must be written in Roman letters and Arabic figures Roman letters and Arabic numerals first of option टा हला जदी इंटरनेशनल आइटम लिखले रोमन लेटर्स एंड अरबिक न्यूमेरल्स according to the postal regulation nothing shall be attached to the postcard except the label bearing the name of the address of the sender what is the maximum size of the label 50 into 20 sorry 60 into 30 mm label टा जो लागि परिबो 60 into 30 60 into 30 label टा लागि परिबो क्वेश्चन देखिबा हो जदी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रिस्पेक्ट टू periodical post is correct no separate postal registration shall be required for transmission of periodicals by post special postal registration किसी दरकार नै periodicals पठिया पई special सही register नहीं जिवो periodicals which are covered under the definition of newspaper and wish to avail the concession rate of postage for transmission by the post a separate registration and license required to be taken under the own provision जोटा कि आमर न्यूज़पेपर पीरियडिकल जोटा कि आमर डेफिनेशन न्यूज़पेपर आसबो सेठी कोन हबो आउ कोन हबो कंसेशनल रेट रे से जिबाउ चाहूची ट्रांसमिशन पाई ताले सेठी सेपरेट पोस्टल रजिस्ट्रेशन लाइसेंस दि दरकार हला एटा आमर ओएस रजिस्टर ऑफ इंडिया रो ले कोन हबो एटी आमर फर्स्ट पेज की लास्ट पेज रे तार रजिस्टर नंबर लिखा हबो हला यदि आमर रेगुलेशन पीरियडिकल पोस्ट तार ये करूनी treated as book post habo and postage paid on it shall be taken into account for assessing charges hela infringement of the condition of specified in the sub regulation of 94 of post office regulation there 24 on periodical post the item shall be treated as book post and any postage paid shall be taken into account for assessing the charges book post vale treat kara habo what is the minimum weight required for an item to be treated as India Post parcel minimum होची केते weight दरकार India Post parcel है पई 5 ग्राम weight under standards for addressing on international item the address of the sender and the address must be written in Roman letters and Arabic numerals answer हबो हला इंटरनेशनल आइटम को एड्रेस कला बेल को रोमन लेटर एंड अरबिक न्यूमेरल रे लिखा जीवो एड्रेस टा RLA according to the postal regulation nothing shall be attached to the postcard except to the label bearing the name and address of the sender what is the maximum size of the label minimum is 50 into 25 maximum is 60 into 30 हला maximum label टा जो लागि परिबो according to the postal regulation what is the postage fee for magazine to be delivered outside the municipal inside the municipal outside the municipal होची 12 टंका and 8 टंका up to 200 ग्राम हला inside the municipal for addressing locations 8 टंका outside the municipal 12 टंका inside the municipal 8 टंका 12 टंका 8 टंका
which of the following is not a condition for a newspaper to be eligible for postal regulation transmission by post ହେଲା which of the following is not a condition for a newspaper to be eligible for postal registration for transmission by post as registered newspaper under the postal regulation 2024. It must be covered under the newspaper under the press and registration of periodical act 2023. It must be printed, published and brought out in the country. It must be registered with the press register of the act under the press registration of periodical act 2023. It must comply with the provision of press registration and periodical act 2023. कोड़ा नॉट ए कंडीशन कोड़ा कंडीशन नाई जोटा कि इलिजिबल हेनी पोस्टल रजिस्ट्रेशन ट्रांसमिशन बाय पोस्ट है which of the following is not a condition for a newspaper to be eligible for postal registration. It must be printed, published and brought out in any country. एटा गोटे कंडीशन ना किसी कि कंडीशन कौन कौन अच्छी न्यूज़पेपर होगापाई पोस्टल ट्रांसमिशन होगापाई ये सब बट द कंबाइंड मैक्सिमम लेंथ ऑफ द गेट लेंथ एंड ब्रॉड अलाउड फॉर ए 1.5 मैक्सिमम कंबाइंड लेंथ 3 मीटर हो 1.5 to 3 मीटर ना कंबाइंड लेंथ फॉर ब्रेथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी कंडीशन फॉर द आइटम ट्रीटेड एज इंडिया पोस्ट पार्सल. It has the dimension of 140 mm with a tolerance of 2.9. It gross weights must be 2 kg. Length exceeds 1.5 kg. पूरा ठीक. The minimum weight 9. The dimension होची minimum 140 into 90 mm रहिबो. India Post parcel रे पूरा necessary condition. Minimum dimension 140 into 90 mm रहिबो with a tolerance of to plus or minus 2 mm in non-roll form. Non-roll form रे रहिबो. For an item in roll form to qualify as India Post parcel, what is the minimum sum on length and what is the diameter? 170 mm है. इंडिया पोस्ट पार्सल को क्वालिफाई होगापाई सम ऑफ लेंथ है 170. मिनिमम लेंथ अलाउड फॉर इंडिया पोस्ट पार्सल हो 1.5 मीटर ना 1.5 मीटर मिनिमम लेंथ अलाउड फॉर ट्रांसमिशन आज इंडिया पोस्ट पार्सल हो 1.5 मीटर. व्हाट इज द मिनिमम वेट अलाउड टू बी ट्रांसमिशन ऑन इंडिया पोस्ट पार्सल 500 ग्राम मिनिमम वेट. व्हाट इज द मैक्सिमम वेट अलाउड फॉर ट्रांसमिशन ऑन इंडिया पोस्ट पार्सल एवं 35 kg आगुरी 20 kg. व्हाट इज द इंडिया पोस्ट पार्सल ऑर्डिनरली ट्रांसमिटेड बाय सरफेस ओनली बाय सरफेस इंडिया पोस्ट पार्सल सरफेस नहीं जीव. व्हाट इज द फॉलोइंग आर वैल्यू एडेड सर्विसेज फॉर इंडिया पोस्ट पार्सल प्रूफ ऑफ डिलीवरी कैश ऑफ इंश्योरेंस ऑल ऑफ द अबव होची वैल्यू एडेड सर्विस. से कैश ऑन डिलीवरी सुविधा नहीं पारे इंश्योरेंस भी करेंगे पार्सल प्रूफ ऑफ डिलीवरी नहीं पारे. हुई ऑथराइज टू स्पेसिफाई द डेजिग्नेटेड पोस्ट ऑफिस प्लेसेस फॉर बुकिंग द आइटम्स अंडर लॉजिस्टिक्स पोर्ट. डेजिग्नेटेड ऑफिस सर्कुलेट होती डेजिग्नेटेड ऑफिस को बुकिंग करेंगे सर्कुलेट. स्पीड पोस्ट इंक्लूड्स द ट्रांसमिशन ऑफ 2 क्लासेस ऑफ आइटम्स स्पीड पोस्ट डॉक्यूमेंट एंड स्पीड पोस्ट पार्सल. आंसर ऑफ स्पीड पोस्ट डॉक्यूमेंट एंड स्पीड पोस्ट पार्सल. Which of the following is explicitly excluded for the contents of the speed post document? Printed material, drawn material, merchandise, written communication. Written communication excluded from the contents. Merchandise होबनी है. Printed material, drawn material, written communication रही परिबो. Contents of the speed post document रे merchandise material रही परिबो नहीं. सेटा हमर merchandise speed post merchandise पे अलगा. How are the speed post document ordinarily transported? By air unless surface transmission is faster. एयर रे जीवो जेहेतु unless surface transmission यदि फास्टर अच्छी तो surface रे जीवो नले एयर रे ही जीवो. What is the maximum weight limit for the speed post document including volumetric weight? 35 kg. Sorry, speed post document रे हो 500 ग्राम. स्पीड पोस्ट पार्सल हो 35 kg है. स्पीड पोस्ट डॉक्यूमेंट पचार ना वॉल्यूमेट्रिक वेट सह 500 ग्राम रु अधिक जीव नहीं. व्हाट व्हेन कैलकुलेटिंग द फीस पोस्टल फीस फॉर स्पीड पोस्ट डॉक्यूमेंट व्हिच वेट इज यूज्ड फॉर चार्जिंग? वॉल्यूमेट्रिक वेट, ग्रॉस वेट. द कंबाइंड वेट ऑफ डॉक्यूमेंट एंड पैकेजिंग ओनली वॉल्यूमेट्रिक वेट. द हायर ऑफ द वॉल्यूमेट्रिक वेट ग्रॉस वेट जोटा अधिक हम वॉल्यूमेट्रिक वेट देखा ग्रॉस वेट देखा जोटा अधिक हम. व्हाट इज द मैक्सिमम थिकनेस अलाउड फॉर द स्पीड पोस्ट डॉक्यूमेंट? मैक्सिमम थिकनेस केते रही पारिबो 24 mm. मन रखु मैक्सिमम थिकनेस केते रही पारिबो स्पीड पोस्ट डॉक्यूमेंट पाई 24 mm. व्हाट आर द मैक्सिमम डायमेंशन फॉर ए स्पीड पोस्ट डॉक्यूमेंट आइटम? 24 mm थिकनेस गला 420 mm 297 ब्रेथ 420 mm लेंथ 297 ब्रेथ 24 mm हो वेट. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द वेट ऑफ द स्पीड पोस्ट डॉक्यूमेंट?
Its short must be less than 500 or less including volumetric weight. It must be 500 ग्राम less hebar अछि weight speed post document रे including volumetric weight. The item posted under the speed post shall be generally be dash specific, address specific. कौन होगा आंसर? address specific ना address specific होगा है address अनुसार proper address लिखा ले जीवो. which the following value added services are available for speed post document? Only proof of delivery, only pickup facility, insurance, all of the above. Proof of delivery by paribe, pickup facility, all of the above. Speed post document. Which of the following applies to the transmission of speed post parcel? All speed post parcel must be transmitted by surface route. Speed post parcel are always issued by air unless surface transmission is faster. Speed post parcel are always transmitted by air regardless of the speed of the route. Speed post parcel must be transmitted by air only if requested by the sender. Always transmitted by air unless speed post parcel always transmitted unless surface transmission is faster. यदि surface transmission faster नहीं ताले इटा पठे परिबो. स्पीड पोस्ट सब एयर रे मते जाई परिबो जेतले यदि surface transmission faster नहीं ताले कौन हम सी एयर जाई परिबो. What is the priority given to speed post parcel when transmitted by surface route? प्रायोरिटी कौन दिया स्पीड पोस्ट पार्सल को यदि सर्फेस रूट जाऊँगी ऑल अदर टाइप ऑफ मेल उपर प्रायोरिटाइज दिज्व क्या स्पीड पोस्ट दे आर प्रायोरिटाइज ओवर इंडिया पोस्ट पार्सल आर एवरी स्टेज ऑफ ट्रांसमिशन सॉरी इंडिया पोस्ट ऑफ पार्सल टू प्रायोरिटाइज कोटा स्पीड पोस्ट प्रत्येक स्टेज ट्रांसमिशन सर्फेस रूट जाऊँगी प्रायोरिटाइज दिया क्या इंडिया पोस्ट पार्सल उपर जब फॉलोइंग नॉट डॉक्यूमेंटेड इन द डेफिनेशन ऑफ डायरेक्ट पोस्ट रे कौन नहीं unaddressed letter, unaddressed cards, unaddressed promotional letter. What must be done on direct post item meant for delivery in other town? They must be sent individual to each town.